पिला माने आज आम आलोचना करवा सेक्सुअल डिफरेंशिएशन विषय। सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स फ्रॉम एन अनडिफरेंशिएटेड जाइगोट है। अनडिफरेंशिएटेड जाइगोट रु आमे केमिति देखिबा जे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंसेस मेल और फीमेल आमे पाइजिबा। appearance of Sertoli cells in the males and granulosa cells in the female can be thought of as the starting point for testicular or ovarian differentiation in many species। तेणु इटा देखा जाए विश्वास करा जाए विचार करा जाए जे मेल मानकर सर्टोली सेल आ फीमेल मानकर ग्रानुलोसा सेल होची स्टार्टिंग पॉइंट जो माने सर्टोली सेल रो तुमर टेस्टिकुलर डेवलपमेंट हबो डिफरेंशिएशन हबो आउ ग्रानुलो सेल्स रो ओवारियन डिफरेंशिएशन हबो हैला। तो बर्तमान देखो एटा होची मुलेरियन डक्ट हैला। मुलेरियन डक्ट रो देखो कोन देइची बाई पोटेंशियल गोनाड सोल्फियन डक्ट आउ क्लोएका मास्कुलाइजेशन हैला बेले कोन हैला ना मुलेरियन डक्ट डिग्रेड करि गला एपटे वोल्फियन डक्ट डिग्रेड करि गला। देखो मुलेरियन डक्ट डिग्रेड कला एपटे वोल्फियन डक्ट डिग्रेड कला। वोल्फियन डक्ट्स बिकम एपिडिडाइमिस एंड डक्टस भाज डिफरेंस से कहया कथा वोल्फियन डक्टा तुमर कोन हला ना एपिडिडाइमिस आ भाज डिफरेंस हला एवं मुलेरियन डक्ट्स बिकम यूटेरिन ट्यूब और न्यूट्रस सेमते हे कि एतुर हला टेस्टिस एटाला ओभारी। तेणु डिफरेंस तुमर सब जिंस आतने मूल जिंसटा कोन एटा मुलेरियन डक्ट सेइतुर ही सब आछि तार मास्कुलाइजेशन और फेमिनाइजेशन है। डिफरेंसेस ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज नॉट ऑकर अंटिल द फेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है। तेणु तापर देखो कौन कहला आज मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो इनटू मैच्योर एडल्ट्स सेक्स डिफरेंसेस एट मेनी लेवल डेवलप सच एज जीन्स क्रोमोसोम को लेवल रे तुमर सेक्स डिफरेंशिएशन होउची गोनाड्स हार्मोन्स एनाटॉमी एंड साइकी बिगिनिंग विथ डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स बाय जेनेटिक and or environmental factor humans and other organisms proceed down different pathway of differentiation as they grow and develop hala। These processes are not fixed and can change over one organism lifetime or over many generations hala। तेणु एटा गोटे फिक्स्ड प्रोसेस नुहे। Evolutionarily in some cases processes of sexual differentiation can produce organisms that are both male and female in between or switch between the two sexes स्विच बिटवीन द टू सेक्सेस मध्य देखा जाए है। तो आम देखा आगू जा सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम विषय टी देखा ह्यूमन्स मेनी मामल्स इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स हैव एन एक्स वाई सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम को मानकर सब अच्छी ना ह्यूमन मेनी मामल्स इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स ह्यूमन्स हैव 46 क्रोमोसोम तो मैंने जानिच इंक्लूडिंग 2 सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स इन फीमेल एंड एक्स वाई इन मेल मैं तुमको बहुत थर कही। The Y chromosome must carry at least one essential gene which determines testicular formation, originally termed TDF है। तेणु TDF जोटा फैक्टर टा रहा a gene in the sex determining region of the short arm of the Y chromosome रो short arm रो सेटा अछि now referred to as SRY gene has been found to direct एटा अछि कोन determining factor टा has been found to direct production of a protein testis determining factor TDF जोटा कुछ which binds to DNA inducing differentiation of cells derived from the genital regions into the testis। In transgenic XX mice and some human XX males SRY alone is sufficient to induce male differentiation बुझिपाल। Other chromosomal systems exist in other taxa such as the ZW sex determination system कार देखा जाए ZW in bird and the XO system in insect। Environmental sex determination refers to the determination and the then differentiation of sex via non-genetic cues like social factor कौन कौन रहा temperature and available nutrient social factor temperature और nutrient ऊपर मध्य depend करुच्ची। In some species such as the hermaphroditic clownfish, sex differentiation can occur more than once as a response to different environmental cues, offering an example of how sex differentiation does not always follow a typical linear path. There have been multiple transitions between environmental and genetic sex determination system in reptiles over time, and recent studies have shown that
टेम्परेचर कैन समटाइम्स ओभरराइड सेक्स डिटर्मिनेशन भाया क्रोमोसोम्स टेम्परेचर उपर डिपेंड कर टेम्परेचर बहुत आफेक्ट कर ठंडा हेले कौन हम गरम हेले कौन हम सेक्स माने डिटर्मिन कर दूसरी सी बुझीपार तो तापर आगू जा ह्यूमन देख यहीटा तुम देख यही स्यूडो ऑटोजोमल रीजन SRY जो फैक्टर गुड़ा अच्छी RP 84Y ZFY এটা सेंट्रोजोम এটা तार Y क्रोमोजोम रो शॉर्ट आर्म है स्यूडो ऑटोजोमल रीजन the human Y chromosome showing the SRY gene which codes for a protein regulating से SRY gene टा ही मुख्य जिनस जोटा कि गोटे कोड करुच्ची which codes for a protein which regulate the sexual differentiation तेणु SRY gene एटा कोडे अच्छी देखि पारछ तो शॉर्ट आर्म रो एटी टॉप रे अच्छी तापर आसीगला the early stages of human differentiation appear to be quite similar to the same biological processes in other mammals and the interaction of genes hormones and body structures is fairly well understood. In the first week of life, a fetus has no anatomic or hormonal sex and only a karyotype distinguishes male from female. Hala, specific genes induce gonadal differences which produce hormonal differences which causes anatomic differences leading to psychological and behavioral differences. तेणु केते डिफरेन्सेस सब देख पारुछ तो स्पेसिफिक जीन्स इंडस गोनाडाल डिफरेन्सेस से जो व्हिच प्रोड्यूस हार्मोनल डिफरेंस से जो गोनाडाल डिफरेंस जो हार्मोनल डिफरेंस हला हार्मोनल डिफरेंस जो तुमर कोन एनाटॉमिकल डिफरेंस हला एनाटॉमिकल डिफरेंस लीडिंग टू साइकोलॉजिकल डिफरेंस एंड बिहेवियरल डिफरेंसेस माने केमिति छोटो जिंस रु चेन इट इज ए चेन सिस्टम हला तापर आसी गला सम ऑफ व्हिच आर इनेट and some induced by the social केतेटा innate सेटा जन्म रु आस्थिबो एटा मूल रु आसीथिबो आउ केतेटा induced by the social environment और टेम्परेचर मध्ये social environment मध्ये प्रभावित करूछ various processes are involved in the development of sex differences in human sexual differentiation in humans include development of different genitalia and the internal genital tract breast body hair and plays a role in gender identification सेटा तुम जानी परिबो तो केमती वेरियस प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व हला बहुत गुडे प्रोसेस को इन्वॉल्वमेंट करिक सेक्सुअल डिफरेंशिएशन हेइता है तेणु द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल डिफरेंसेस बिगिन्स विथ द XY सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम जोटा हम देखुचे दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड कॉम्प्लेक्स मेकानिज्म आर रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फेनोटाइपिक डिफरेंसेस जो एक्सटर्नल कैरेक्टर हम देखि पारुचे फेनोटाइप गुडा डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ह्यूमन तुम केम चिन्हुच जे ये पुओ और ये झील ये पुरुष ये महिला कौ जिनसटा तुम जापर बुझीपार तो से जो प्रभेद अच्छी माने लिंगगत प्रभेद एंड सेटा हूँ फ्रम एन अनडिफरेन्शिएटेड जाइगोट सेटा कि मूल जिनसटा कौन गोटे जाइगोट से जाइगोट ही सब जिन तेणु ए टिपिकल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड एम्बिगुअस जेनिटालिया कैन बी ए रिजल्ट ऑफ जेनेटिक एंड हार्मोनल फैक्टर तेणु जेनेटिक और हार्मोनल फैक्टर रोच द डिफरेंशिएशन ऑफ अदर पार्ट ऑफ द बॉडी देन द सेक्स ऑर्गन क्रिएट्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है तेणु सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर गुड़ा परवर्ती समय में देखिपर तेणु प्रथम जिनस कौन प्रथम तुम हूँ जेनिटालिया गोटे पिलाटा देखिए आम कहूचे से जेनिटालिया आम देखिए कहूचे ना ये पुओ ये झील बुझीपार तेणु परवर्ती समय में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर गुड़ा देखिपर पर एडोलेसेंस स्टेज रे तेणु प्रथम कि मूलर देखिले कौन जेनिटालिया तेणु से जिन गुड़ा हूँ क्या द्वारा डिफरेन्शिएशन बाय जेनेटिक फैक्टर एंड थ्रू हार्मोनल फैक्टर दुईटा फैक्टर रहा गोटे जेनेटिक फैक्टर आउ गोटे हार्मोनल फैक्टर दुईटा फैक्टर द्वारा तुम सेक्स डिफरेन्शिएशन हो मूल जिनस अलग है आसूची किए पुओ हो किए झील हो बुझीपार तेणु डिफरेन्शिएशन ऑफ अदर पार्ट ऑफ द बॉडी देन द सेक्स ऑर्गन क्रिएट्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखि पारुचे ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर डेवलप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट एडोलेसेंस जो छोट पिला पैंट सार्ट पिंधे दब आम भी देखी छोट बेले आम पुओ झील सब पैंट सार्ट पिंधिकी स्कूल जाऊँ मोर मन अच्छी देखीचु तुम जापर कि पुओ किए झील बुझीपार किछि दिन पर तुम धीरे धीरे जापर ना ये पुओ ये झील सब जो छोट पिला जो शुईदेव ये छोट पिला जो कौच जो जन्म हाँ
ଆପଣ ଦେଖିବ କୋଉ ଆଈଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କିଏ ଛୋଟ ପିଲା ବସିଥିବ, ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଏକାଠି କରିଦେବ, ବସେଇଦେବ, ଜାଣିପାରିବନି, ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବନି କିଏ ପୁଅ କିଏ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଡାଇମର୍ଫିଜମ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ସେକ୍ସୁଆଲ କାରଣ ସ୍କେଲିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ କରିବ ଡ୍ୟୁରିଂ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବିକମ୍ସ ମୋର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସଡ କେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ନା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଷ୍ଟେଜରେ। ସେକ୍ସୁଆଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ହାଜ ବିନ୍ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଟୁ କୋରିଲେଟ୍ ୱିଥ୍ ସ୍କେଲିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। କାହାର ଚେଷ୍ଟ ବ୍ରଡ୍ ହେଲାଣି ହେଲା, କାହାର ଅଣ୍ଟା ନ୍ୟାରୋ ହେଲାଣି ହେଲା, ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। that become dimorphic during early childhood such as arm length to stature ratio, but not with characters that become dimorphic during puberty such as shoulder width ହେଲା। ତେଣୁ other animals ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, the first genes involved in the cascade of differentiation can differ between taxa and even between close related species। ମାନେ କ୍ଲୋଜ ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନ୍ଟା ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଡିଫର କରିଯାଉଛି। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଇନ୍ ଜେବ୍ରା ଫିସ୍ the first known gene to induce male differentiation is the AMH gene. In tilapia it is TDMRT1 and in southern catfish it is ସମସ୍ତେ ମାଛ କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେମିତି ଭ୍ୟାରି କରିଯାଉଛି ଜିନ୍ଟା। in southern catfish it is FOXL2। So in fish, due to the fact that modes of reproduction range from gonocorism distinct sexes to self-fertilizing जोटा आम कहे hermaphroditism है। where one organism has functional gonadal features of multiple sexes, गोटे organism ता भीतर दीटा माने थिबो गोनाड, मेल गोनाड थिबो फीमेल गोनाड थिबो, ताको आम कहे hermaphrodite। तो ये जो hermaphroditism देखुचे तेणु सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इज कॉम्प्लेक्स सही केस रे। तेणु टू मेजर पाथवे इन गोनोकोर एक्जिस्ट, one with a non-functional intersexual phase, गोटे हूँ non-functional फंक्शन करूनथिबो intersexual phase leading to delayed differentiation हैला, and one without माने गोटे हूँ non-functional intersexual phase leading to delayed differentiation, आ गोटे हूँ functional। बुझिपारछ तो, गोटे हूँ non-functional intersexual phase, आ गोटे हूँ functional intersexual phase। से फंक्शनल टा हूँ तुम प्राइमरी एवं जोटा नॉन फंक्शनल स्टेज से कहते सेकेंडरी, वेयर डिफरेंसेस बिटवीन द सेक्सेस कैन बी नोटेड प्रायर टू हैचिंग। हैचलिंग है तुम जापर। सेकेंडरी गोनोकोरिस्ट रिमेन इन द इंटरसेक्स फेज until a biotic or abiotic cue directs development down one pathway. Primary gonocorism without an intersex phase follows classical pathways of genetic sex determination, but can still be later influenced by the environment. Differentiation pathways progress and secondary sex characteristics such as anal fin, bifurcation and ornamentation typically arise at puberty। puberty time रे ताकर arise कर जाए। In birds, thanks to research on Gallus domesticus, it has been shown that determination of sex is likely cell autonomous. That means that sex is determined in each somatic cell independently of or in conjunction with the hormone signaling that occurs in other species है। तेणु Gallus domesticus रे कौन देखा determination of sex is likely cell autonomous है। तेणु studies on gynandrome of chickens showed that the mosaicism could not be explained by a hormones alone, pointing to direct genetic factor, possibly one or a few Z specific genes such as a double sex or DMRT1।